Hi, welcome to the second part of the sixth chapter of How Finance Works, a book by Mihir Desai. This eventually is going to be the last chapter of this series, and in this particular video, we are going to cover some of the case studies mentioned at the end of the book, at the end of the chapter, which is capital allocation. Okay, so first such case study is about the acquisition of Convergence Pharmaceuticals by a company called Biogen. Now, if we go deep into this case study, we will find that in January 2015, Biogen announced the acquisition of Convergence Pharmaceuticals, a company working on developing drug therapies for neuropathic pain. Convergence was a small biotech company based in Cambridge, England. This ABC, a major player in the pharmaceutical industry, had deprioritized its therapies for pain management, spun off Convergence, and gave it some seed funding to continue its research. At the same time, Biogen began to prioritize therapies and drugs for nerve pain and was looking for acquisition opportunities. Okay, so there is this company called Convergence, which basically is a small pharmaceutical company, and it has its own some of it has a unique formula for neuropathic pain. Now, the acquiring company is Biogen, which is a leading player in the industry, and it is trying to acquire this company called Convergence. Apparently, because Convergence has some unique formula which has potential in the future. At a conference, one of Biogen's scientists learned about Convergence and its therapy for this tri, tri trigeminal neuralgia, a debilitating form of facial pain. At the same time, Convergence was shown what is referred to as phase 2 data. So as I said that they had some interesting findings which had future potential, due to which this company Biogen started to analyze the net present value by assessing the proper process, right? And they started to look into this matter, like they assessed the entire project of acquisition and assessed the risks involved with the process. How would you incorporate the technological risk of a new pharmaceutical product into valuation of an acquisition? How would the potential existence of synergies affect your opening and final bids? ओके सो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने इनिशियल डिटेल्स पढ़ा इस केस के बारे में कि कोई कंपनी है कन्वर्जेंस जिसको बायोजेन नाम की कंपनी एक्वायर करना चाहती है एंड दिस इज हैपनिंग ऑन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री राइट बिकॉज एविडेंटली द लेटर हैज a good finding on a particular niche topic like neuropathic pain and the project has future potential. अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट द टेक्नोलॉजिकल रिस्क ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इनटू द वैल्यूएशन. सो ये प्रोडक्ट न्यू है राइट, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है लाइक यहाँ पे दिस दिस ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, ये एक नया फाइंडिंग है बट इट इज अ न्यू concept, right? It inherently carries some risk with it. So हमसे पूछ रहा how would the potential existence of synergies affect your opening and final bids? Okay, so basically कि कौन कौन से रिस्क है और ये रिस्क कैसे आप तुम्हारे एक्विजिशन की स्ट्रेटजीज को इम्पैक्ट करेंगे, राइट? So you should model the technological risk by building various scenarios when developing your valuation. Based on the likelihood of these scenarios, anything from the technology being worthless to it taking off, you can create a weighted average of these scenarios to generate your final expected value for acquisition. So this is basically typical NPV analysis, जहाँ पे हम risks को weight करते हैं. Like you must be remembering a concept we studied earlier, which is WACC.
weighted average cost of capital. So this concept is similar. तो वैल्यूएशन के वक्त आपको क्या करना है कि डिफरेंट रिस्क को सफिशिएंट वेटेज देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यू हैव टू कम अप विथ अ बिड, राइट? You also want to think about the standalone value and the value you will be providing to that company. When bidding, the expected value, including the value added, should be your final ultimate bid. While you may base your opening bid on the valuation from a standalone perspective. So आपको वैल्यू के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि ये प्रोजेक्ट आपके कंपनी को किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर रही है. When bidding, the expected value, including the value added, should be your final ultimate bid. याद है वैल्यूएशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे हम free cash flow is a method to assess the valuation of a company. और फ्री उस वाले कंसेप्ट में भी यही कुछ था कि कितना वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपेक्टेड कितना वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उसके हिसाब से आपको एक 3 सिनेरियोस एसेस करना चाहिए. एक बेस्ट केस सिनेरियो, एक एवरेज केस सिनेरियो, एक वर्स्ट केस सिनेरियो. और अकॉर्डिंगली आपको इन तीनों के बेसिस पे एक बिड करना चाहिए. तो वही यहाँ पे बोला है. Convergence is what Biogen's CFO Paul Clancy calls a one molecule product. That is one therapy for one disease. Since the uses for the product is narrow, the risk is high. So Biogen sought to mitigate some of that risk. Because Convergence was a small company that needed more funding, Biogen offered it cash up front to cover its funding costs and then a percentage of future profit. This way, both Biogen and Convergence had skin in the game. तो यहाँ पे बोला है कि बायोजेन का जो सीएफओ है पॉल क्लांसी, वो कन्वर्जेंस के इस प्रोजेक्ट को वन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बोलते हैं. लाइक कन्वर्जेंस एक बहुत ही नीशे डोमेन में ऑपरेट करता है और दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर कि दिस इज अ कंपनी व्हिच सर्व्स अ वेरी नीशे कैटेगरी प्रॉब्लम. And Convergence aims to diversify its various diversify in various specializations, and it wants expertise in that field. So by acquiring this company Biogen, it will have that much needed expertise, right? So that is one of the motivations to actually acquire this company. और नया नए नए कंपनी और न्यू आइडिया होने के कारण उनको फंडिंग भी चाहिए थी जो बायोजेन ने ऑफर किया. क्या अप फ्रंट कैश अप फ्रंट टू कवर इट्स फंडिंग कॉस्ट एंड देन अ परसेंटेज ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. कि मैं आपको ऑपरेशन के लिए जितना भी पैसे की जरूरत होगी वो मैं अभी प्रोवाइड करूंगा और आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स के एक सर्टेन परसेंटेज को मैं लूंगा, है ना? इस तरीके से दोनों का फायदा हुआ. अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि with a contingent value right instrument, the payoff to the seller is the function of a future event such as drug performance or the performance of an acquisition. How does the CVR reallocate risk in the Biogen convergence deal and why would Clancy want to use one? तो contingent value right क्या होता है कि suppose this company convergence, उनका जो नया आइडिया है it blooms in the future, okay, and then it will be of very high value and very much demand. In that situation, um, Convergence will be holding a major portion of the profit and operations of the company, right? अब पूछ रहा है कि अच्छा इस प्रोसेस को कहते हैं सीवीआर. अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सीवीआर किस तरीके से रिस्क एलोकेट करने में मदद करती है दोनों कंपनीज को, राइट? सो by using a CVR, Biogen has shifted some risk to the seller relative to an outright acquisition. This transfer makes sense for several reasons. When faced with taking a CVR, only confident sellers would be willing to accept it, so it selects against those with weaker prospects. Additionally, Biogen has ensured it hasn't overpaid if the technology fails. Finally, the CVR gives the seller an incentive to work hard to ensure success of the drug.
CVR addresses the deep asymmetric information problem in this setting. Convergence knows the value of the molecule that it's selling better than Biogen ever could. तो सीवीआर करने के तीन फायदे हैं यहाँ पे। पहला फायदा तो ये है कि रिस्क, अगर कोई फ्यूचर में रिस्क आता है तो Biogen will not be the only one, or the acquiring company will not be the only one facing the risk. The risk, uh, let's say फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। ये पहला फायदा है सीवीआर करने का। दूसरा फायदा ये है कि फेयर डील। ओके, सी हियर, finally CVR additional Biogen has ensured that it hasn't overpaid if the technology fails, right? Or finally, the CVR gives the seller an incentive to work hard. Okay, uh, motivation, let's say, कि अगर अच्छा काम करती है कन्वर्जेंस, तो उनके पास भी एक fair amount of stake है। So if they are able to actually realize the investment, okay, productively, then they also have an incentive for doing so. That is another advantage of using the CVR method, CVR instrument. After the acquisition was complete, Biogen began the integration process. The question was, should Convergence remain in England or be brought to United States? At first, Biogen decided to keep Convergence where it was. If it turned out to be a marketable project, Biogen would reconsider. By keeping the Convergence team in England, Biogen thought that it could preserve the team's entrepreneurial spirit. दूसरा सवाल, मेजर सवाल ये था कि बायोजन को इंग्लैंड में ही रखा जाए या यूएस में लाया जाए। तो इन दिस केस कन्वर्जेंस के नहीं, बायोजन के मालिक ने ये फैसला लिया कि फिलहाल इसको इंग्लैंड में रहने देते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प them preserve the entrepreneurial spirit. What would some of the challenges be if Biogen decided to fully integrate convergence? There are many challenges. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि ये fully integrate नहीं हुआ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये जो कंपनी थी कन्वर्जेंस, सॉरी, ये जो कंपनी थी बायोजन, ये कन्वर्जेंस को पैसा दे रही है, सीड फंडिंग दे रही है, और in exchange for a stake in the profit in the near future. अब ऐसा ना करके अगर डायरेक्टली एक्वायर कर लेती, राइट, बायोजन, लेट्स से दिस इज बायोजन एंड दिस इज कन्वर्जेंस, अगर पूरा फुल्ली एक्वायर कर लेती बायोजन कन्वर्जेंस को, इन दैट केस क्या चैलेंजेस आते? पहला तो चैलेंज है कि साइंटिस्ट हु डेवलप द ट्रीटमेंट मे नॉट वांट टू मूव टू बॉस्टन। The scientists who develop the treatment may not want to move to Boston, which could result in losing knowledge of how to continue development. पहला यह है कि जो कोर कुछ साइंटिस्ट थे उस प्रोजेक्ट के, वो शायद बॉस्टन में मूव करने को रेडी नहीं होते। इन दैट केस डेवलपमेंट में काफी रुकावट आ जाती है ना। दूसरा चैलेंज यह है कि कल्चरल क्लैशेस हो सकते थे इंग्लैंड और यूएसए के बीच। और तीसरा जो है, दैट इज कन्वर्जेंस टीम्स मेंबर हैड इंसेंटिव्स टू वर्क एज अ टीम। और जो का टीम स्पिरिट आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रेजिंग अप अ न्यू कंपनी, राइट? अगर ऐसा होता कि फुल्ली एक्वायर कर लेती, तो हो सकता है टीम में कुछ जो ओरिजिनल टीम है उसमें कुछ रुकावट आती, लाइक नए मेंबर्स को ऐड करना, पुराने मेंबर्स को फायर करना, एंड ऑल, राइट? So these are the things that impede the growth of a new emerging company, and these are the challenges which the particular company Biogen had to face if it decided to fully integrate convergence. Okay, so this was about this first case study. Now we are going to study Henken in Ethiopia, risk of expanding in another country. So
इस केस स्टडी का मेन मुद्दा यह है कि हेनकेन एक बियर कंपनी है, ब्रूअरी कंपनी, एंड इट इज ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स operations in another country which is Africa. ओके, अफ्रीका. सो पहला सवाल यह है कि in addition to all the normal concerns when acquiring a company, what are the financial concerns of acquiring company in another country? पूछ रहा है कि नॉर्मल कंसर्न्स के अलावा, जो कि नॉर्मली एक एक्वायरिंग के प्रोसेस में होता है, राइट, और कौन कौन सी फाइनेंशियल कंसर्न्स है जो कि एक कंपनी को दूसरे नेशन में एस्टेब्लिश करने में आती है, राइट. सो पहला सच पोटेंशियल रिस्क ये है कि रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी. ओके, करेंसी के का प्रॉब्लम ये होता है कि एक करेंसी के टर्म पे देखा जाएगा तो लेट्स से अफ्रीका का करेंसी वीक है एज कम्पेयर टू डॉलर. तो अफ्रीकन टर्म्स में हो सकता है कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू यूएस करेंसी इट इज सीन दैट नहीं यार, उतना अच्छा कैश फ्लो नहीं है जितना हमने सोचा था, राइट. दूसरा रिस्क यह है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स और टैक्सेशन. हो सकता है कि अफ्रीकन गवर्नमेंट में कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हो, राइट, जो कि फ्री ट्रेड में रुकावट डाल दे. तीसरा रिस्क यह है कि revenue projections will be lower than expected because of different cultural taste. तो कल्चरल टेस्ट में एक फैक्टर आ सकता है कि शायद अफ्रीकन कंट्रीज में बियर उतना अच्छा पसंद ना करे, या फिर इस पार्टिकुलर फ्लेवर के बियर पीना पसंद ना करे. सो दिस इज येट अनदर रिस्क. एंड द फाइनल रिस्क इज पॉलिटिकल रिस्क. ओके, हो सकता है कि अचानक से अफ्रीकन स्टेट जो है सारे ब्रूअरिंग कंपनीज को अपने अंडर में ले ले, है ना. These are the major concerns of establishing an entity in a foreign nation. Whenever a company has operations in a new country, logistics can particularly be problematic. Large companies like Henken have specialists in logistics and negotiations. तो और फाइनल प्रॉब्लम ये है कि लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ सकती है. लॉजिस्टिक्स मतलब बेसिकली कैसे समझाऊं, ट्रांसपोर्टेशन, राइट. सही टाइम पे सही माल आपको मिल रहा है, सही एकदम सही वक्त पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इस पार्टिकुलर जोन में डिमांड है, राइट, कितनी जल्दी हम अदर कम्पिटिटिव प्लेयर्स के मुकाबले कितनी जल्दी हम उस डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं, दैट इज द एडवांटेज गिवन बाय लॉजिस्टिक्स, राइट. सो लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा रोल आ जाता है ऐसे केसेस में, राइट, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स अगर किसी फॉरेन नेशनल में फॉरेन नेशन में हम लोग अपना एंटिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकती है. उसके बाद पूछ रहे इन एन इमर्जिंग मार्केट लाइक अफ्रीका देयर आर ऑफन सरप्राइज कॉस्ट सच एज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. हाउ माइट यू इनकॉर्पोरेट देम इन योर इनिशियल एनपीवी फॉर द एक्विजिशन. कहता है कि आप नए और इमर्जिंग मार्केट्स में इस्टेब्लिश करने के लिए सरप्राइज कॉस्ट कुछ आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. तो ऐसे कॉस्ट का मुकाबला आप कैसे करोगे. तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम यूजुअली करते हैं. हम बेस्ट केस सिनेरियो, एवरेज केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों को, तीनों को अप्रोप्रिएट वेटेज देंगे, और फिर इनको एसेस करके हम लोग एक प्रॉपर वैल्यूएशन पे आएंगे, है ना, प्रॉपर डिसीजन पे आएंगे कि इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक फॉरेन एक्विजिशन क्रिएट्स फॉर इंटीग्रेशन. आपको क्या लगता है कि फॉरेन एक्विजिशन इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम करता है. अब इंटीग्रेशन से यहाँ मतलब है कि सिंस Henken is an American company, how quickly and how easily it can integrate, or let's say synergize with the new entity that is established in Africa, right? So the chances of cultural differences can be higher again, right? Cultural differences एक रुकावट कर सकती है दोनों यूनिट्स को एक साथ काम करने में. In the work practice of not only the business but also the country, synergies may be harder to realize than expected. For example, you can't integrate an IT call center if there is a language barrier. Additionally, there are hazards of integrating a company thousands of miles away. Local management may not have an incentive to work with you and may resist your changes. Okay, so यही
चैलेंज दिक्कत पैदा कर सकती है, जो कि कल्चरल डिफरेंसेस है, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस disintegrations and all that, right? So this completes our another case study, right? Now in the next case study, we will learn about Biogen's share repurchases. Okay. Now Biogen, we know that it is a pharmaceutical line company. So leading up to 2015, Biogen had achieved top line growth of between 20% to 40%, driven by the success of Tecfidera, a treatment for multiple sclerosis. Biogen had nearly doubled its business. Since the company was building up cash and its financial outlook was robust, investors were especially keen to understand what the company was planning to do with excess cash. 2015 तक बायोजेन कंपनी जो है काफी फायदे में चल रही थी और काफी पैसा छाप रही थी। तो इन्वेस्टर्स क्यूरियस थे कि उन प्रॉफिट्स, एक्सेस प्रॉफिट्स को कंपनी कैसे यूज करने की सोच रही है। तो हम बाद में पता चलता है कि 2015 में सीएफओ पॉल क्लैंसी जो है शेयर रिपर्चेस करने की सोच रहे हैं, बट उन्होंने तभी इमीडिएटली शेयर रिपर्चेस नहीं किया, क्योंकि तब जो है स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई थे। ओके, इट वुड हैव रिजल्टेड इन लॉस फॉर द कंपनी। सो कुछ टाइम बाद जब टेकफेडरा का ग्रोथ थोड़ा थोड़ा रुक मतलब स्टेबल होने लगा, तब कंपनी की स्टॉक प्राइस भी 200 कुछ समथिंग बन गई। ऑफ कोर्स हम डॉलर की बात कर रहे हैं। अब तब क्लैंसी को लगा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिपर्चेज माई शेयर्स, और उन्होंने वही किया। अपने मार्केट में जितने भी शेयर्स थे अपने कंपनी के, वो खरीद लिए, राइट। अब हमसे पूछ रहे कि व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डज क्लैंसी हैव ओवर एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स इन बायोजन व्हेन ही परफॉर्म्स अ वैल्यूएशन ऑफ हिज ओन कंपनी। तो क्लैंसी को क्लैंसी बीइंग अ सीएफओ ऑफ द कंपनी, सीएफओ ऑफ बायोजन, उनके पास कौन सी एडवांटेजेस एंड उनके लिए कौन सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है as compared to the analysts of that company, right? So हम जानते हैं कि एनालिस्ट के मुकाबले एक कंपनी के सीईओ और सीएफओ के पास कंपनी की ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, राइट? by utilizing which they can obtain the best value for their company. What are the advantages to undertaking share buybacks over a short period of time? शेयर बायबैक करने के शॉर्ट टर्म में क्या फायदे हैं? फायदा यही है कि यार अगर कोई कंपनी अपनी शेयर बायबैक कर रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स को ये सिग्नल देती है कि कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है और इसका प्राइस इन फ्यूचर बढ़ने वाली है, राइट? सो बढ़ने वाली है, इसलिए उस पर्टिकुलर शेयर प्राइस का जो मतलब शेयर का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाता है, राइट? अब आपको अगर मैं एक कॉन्टेक्स्ट दूं, तो रीपर्चेस करने का जो मेथड है वो ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती सारे इन्वेस्टर्स को अपने शेयर छोड़ने ही पड़ेंगे। इट इज जस्ट एन ऑफर जो कि कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को, कि आप अगर चाहो तो हमारे पास बेच सकते हो, कंपनी खरीद लेगी आपसे शेयर, है ना? सो in this process many investors might choose not to let go of their share, right? Might choose not to let go of their share, and that might lead them to long term wealth, right? Because एक तो डिमांड सप्लाई की मिसमैच की वजह से काफी हाई प्राइस हो जाता है इस शेयर का, क्योंकि only few shares are available in the market for the company, since majority of the shares have been repurchased by the company, right? So due to demand supply mismatch, the share prices go up, and moreover, that demand supply mismatch further aggravates uh, due to the fact that since company has repurchased its own shares, there is a possibility that the share prices are undervalued and it will grow in the near future. Only this much speculation soars demand of the shares. This is one advantage, short-term advantage, that share prices goes exorbitantly up,
Okay, so this is not important. Now we are going to learn about a shareholders revolt against Apple. सो 2012 में क्या था कि एप्पल एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश लेके बैठा था, राइट? और शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स क्यूरियस हो गए कि ये लोग इतने बड़े पाइल ऑफ कैश के ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं, व्हाई डोंट दे डिस्ट्रीब्यूट इट और एलोकेट इट प्रोडक्टिवली, राइट? लेकिन एप्पल ऐसा नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? इनका कैश जो है आयरलैंड में था, एंड bringing it to US might attract tax consequences. That is why Apple was reluctant to distribute the cash, and moreover, it was piling up that cash because it was suspecting um, any future turmoil in the near future, right? कि कंपनी कोई उतार चढ़ाव में, इकोनॉमी में कोई उतार चढ़ाव आएगा जिसकी वजह से the company will need huge pile of cash. But it was not a very good explanation, right? दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया कि they could use cash for future investment opportunities. But then again, this explanation was also dubious because of the fact that $130 billion is not a small amount of money. ठीक है, इन इतने सारे पैसों से वो लोग यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि हेवलेट पैकर्ड जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनको 3 times 130 billion was enough to buy Hewlett Packard's 3 times over. So that is why the investors claim was strong, right? कि आप इतने सारे पैसे अपने पास होल्ड करके मत रखो, या तो आप कोई प्रोडक्टिव चैनल पे इन्वेस्ट करो या फिर हमें दे दो पैसे, राइट? बट एप्पल पैसे देने को राजी नहीं थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस. Since most of its cash was in Ireland, bringing back to the cash to United States might trigger tax consequences that Apple didn't want. Okay, so इसके against में जो है एक्टिविस्ट जिसका नाम है कहाँ गया, आइनहॉर्न एंड आइकन. सो आइनहॉर्न एंड आइकन ने क्या सजेस्ट किया कि स्टॉक स्प्लिट करने को बोला कि यार आपका 450 अभी जो करंट करंट वैल्यू है, इसको आप ऐसा कर दो, आप 350 और 100 कर दो. ओके, और इस पे आप फर्दर डिविडेंड दे दो. अब इस पे डिविडेंड देने से क्या होगा कि सी effectively Einhorn was dividing the $45 of earning per share into $35 of earning associated with their common shares and $10 of earning associated with their iPref shares. तो 450 हमारा मेन स्टॉक था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये हुआ मेन और ये हुआ iPref. तो दोनों का मिला के टैक्स काउंट नहीं होता, राइट? इसलिए ये सजेशन दिया कि आप दोनों को स्टॉक को स्प्लिट कर दो, फिर डिविडेंड दो, फिर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कर सकते हो इस तरीके से, राइट? बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो इट इज नॉट अ वेरी गुड, यू नो, ये अच्छा बहुत मतलब इफेक्टिव नैरेटिव नहीं है, क्योंकि इट वुड बी सेम एज यूजिंग द एज नॉट स्प्लिटिंग, राइट? बट इफेक्टिवली एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया एज आइनहॉर्न ने जैसा कहा. मतलब नॉट एज लाइन टू लाइन सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बट pretty much it followed what Einhorn suggested. Okay, so how could Einhorn create $150 per share by this financial engineering? What's wrong with the plan? What happened to this idea of value neutrality? Okay, so इसमें सारी टेक्निकलिटीज है कि आप पढ़ सकते हो अगर पॉज करके कि कैसे अ, उस $450 पर शेयर को इन्होंने $600 का वैल्यूएशन किया. ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो. मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, टू कीप इट सिंपल. अब लास्ट में बोल रहा है कि इमेजिन दैट यू आर एप्पल. Einhorn has created a revolt over the iPrefs and your shareholders are demanding that you do something. Do you agree with the iPref idea, even though you know that it won't do what Einhorn is promising? Do you try out?
try to point out to your shareholders that his math is dubious. Do you give a dividend? Buyback shares? पूछ रहा है कि आप अगर एप्पल के मालिक हो और आप देख रहे हो कि आपके कैश स्टॉक पाइलिंग की वजह से शेयर होल्डर्स एक्टिविस्ट्स रिवोल्ट कर रहे हैं और वो डिविडेंड की मांग कर रहे हैं, तो आप उस पोजीशन में क्या करोगे? क्या आप समझाने की कोशिश करोगे अपने शेयर होल्डर्स को कि ये आइनहॉर्न जैसा लॉजिक दे रहा है, ये गलत लॉजिक है, या फिर आप डिविडेंड दोगे, या फिर आप शेयर्स को बाई बैक करोगे? क्या करोगे आप? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इवन दो आइनहॉर्न्स लॉजिक वाज अ लिटिल dubious, Apple effectively buckled and launched one of the largest share buyback programs ever and increased its dividend share several fold over time. It committed to distributing over $100 billion by the end of 2015. At the same time, Apple agreed to distribute cash. It borrowed about $20 billion. Why borrow money when you are sitting on a large sum of cash? One reason is it wanted to avoid taxes. Apple had around $115 billion of debt, had distributed $290 billion. Okay, okay. So इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऑल्दो आइनहॉर्न का लॉजिक, आइनहॉर्न जो कि एक्टिविस्ट शेयर होल्डर है हमारे केस में, उनका लॉजिक गलत था, फिर भी एप्पल ने क्या किया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर बाईबैक करने का मतलब कोशिश किया, राइट? उन्होंने क्या किया, अपने लार्ज स्टॉक पाइल ऑफ कैश की मदद से अपने सारे शेयर्स खरीद लिए, मतलब बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, राइट? क्या किया उन्होंने? इट कमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर $100 billion बाय द एंड ऑफ 2015। लेकिन वो अपने कैश की मदद से नहीं किया, राइट? उसके लिए फर्दर डेप्ट लिया। अब उनके पास ऑलरेडी $130 billion ऑफ कैश थे, फिर भी उन्होंने डेप्ट लेके क्यों शेयर रिपर्चेस किया? To avoid tax consequences. Okay. In 2015, Apple had around 115 billion of debt, had distributed 290 billion largely through buybacks, and held around 280 billion of cash. Okay. It funded much of its returns to shareholders by borrowing. So जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने अपने buybacks पूरा डेप्ट की मदद से कंप्लीट किया. Over time, and particularly at the announcement of these distributions of cash, Apple stock rose quite a bit and ultimately split. Einhorn's logic was wrong, and he likely knew it, but he succeeded in shining a light on the problem of cash at Apple. And Apple management effectively said, "Fine, we will distribute these cash flows and go down the distribution branch of the capital allocation tree." So कह रहा है कि अंत में सब कुछ अच्छा हो गया, और ये एक्टिविस्ट शेयर होल्डर आइनहॉर्न खुद जानता था कि उसका लॉजिक है, बट फिर भी उन्होंने एक अच्छा मेथड रिकमेंड किया एप्पल कंपनी को कि कैसे वो लोग अपना एक्सेस कैश यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस बाईबैक की वजह से क्या हुआ कि एप्पल स्टॉक रोज क्वाइट अ बिट, थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया एप्पल का जो स्टॉक था, राइट? So all in all, this ends the end of this chapter. Now let's look at uh, the notes of this particular chapter. Okay. Um, as you can see, एक सेकंड में दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, so this is my note. Also one major thing that I wanted to know, that if any of you want notes of previous chapter or any soft copy, right? So what you can do is you can reach out to me in the mail address that I have given in the about section of my YouTube channel. There is a mail ID mentioned, which is samprit5005 @gmail. Okay. In this email ID, you can reach out to me and ask me if you need, what exactly do you need, and I can provide you that. For example, if you need How Finance Works by Mihir Desai ka soft copy, then I can mail you that. I'll just ask me, right? Ask me for it. And yeah, so this is about the end of this chapter. Let's quickly look at the summary of this chapter. In this chapter called Capital Allocation,
we basically pondered over what to do with the excess capital or excess cash the company have. सो कंपनी के पास दो ऑप्शन होती है, या तो आप रिटेन कर लो, अपने पास रख लो, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिटेन करने के दो तरीके हैं। पहला है ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, जो कि एक पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, और दूसरा है मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कि किसी कंपनी को खरीद लेना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन। दूसरा जो तरीका है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर होल्डर्स में। दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डिविडेंड दे दो या फिर बाईबैक कर लो। नॉन एप्पल ने, हमने अभी डिस्कस किया, एप्पल एप्पल ने बाईबैक किया। और दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड में दो तरह के डिविडेंड होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल। एक बार अगर आपने नॉर्मल डिविडेंड डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको देना ही, मतलब देते ही देते ही रहना पड़ता है। दैट इज वाई कंपनीज ऑप्ट फॉर स्पेशल डिविडेंड। So yeah, that's all about this chapter. Thank you for viewing my series on how finance works. I hope this series was beneficial to you. If you find these videos helpful, then please share such videos with your friends so that they can also benefit out of these videos. Thank you and have a nice day.